ओके, प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पे। देखिए इसमें टॉप व्यू एंड देन इसका जो सेक्शन व्यू है, यहाँ से सेंट्रल से जब इसे कट करेंगे तो आपको जो व्यू मिलेगा वो ये है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डायमीटर हैं। हाइट है इसकी 40, 30 एंड 30 एंड देन 30 डायमीटर, 40 डायमीटर एंड देन 50 डायमीटर एंड जो इनर है वो 22 डायमीटर है। ओके, देन 70 बाई 70 का ये बेस यहाँ गिवन है इसका एंड 10 रेडियस एंड 15 डायमीटर। ओके, इस आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सॉलिड स्क्रीन पर आते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करेंगे स्केच। और मैं ऐसे लेता हूँ फ्रंट प्लेन। ओके, एंड देन ड्रॉ सेंटर लाइन, यहाँ से सेंटर लाइन ले लीजिए एंड ओके ड्रॉ करता हूँ मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट ओके, टेक लाइन एंड ड्रॉ द रफ स्केच। और यहाँ से एक रफ स्केच इसको ड्रॉ करेंगे एंड देन ओके I hope clear हुआ हो ये। then specify the dimensions which is 40 and 30. This is 30 and this is also 30. Okay, next specify the diameter. This is 30, this is 40 and this is 50. Now our sketch is fully defined. Right click, exit from sketch and feature revolve boss base. Okay, now get this, select the face and sketch, take circle, specify center and dimension 22. Now right click, exit from sketch, features and extruded cut and cut through all. Okay, so ये हो गया। then again select this face and sketch and take a rectangle, center rectangle। ठीक है, rectangle लेंगे यहाँ पे, center rectangle and then okay right click and specify the dimensions 70 by 70 and this is also 70. Now fill it and specify radius 10 for all the corner. Again take circle and draw the circle. Okay, here and here also right click and specify the dimensions which is 15 diameter. Now select all the circle and hold the control key and make the relation equal. Now right click and exit from sketch or extruded boss face, select it contour and delete it and give the extruded boss face 10 and now okay. So I hope ki clear हुआ हो ये। then fill it which here is 10 and this is also 10. Okay, now again fill it and specify 5 mm fillet on the base. Okay, so I hope कि clear हुआ हो ये आपको। then again appearance and specify a color. Okay, now file and save as type choose कीजिए and then save file. Again make drawing from part, ड्राफ्टिंग करेंगे इसके, ब्राउज, सेलेक्ट टू स्टैंडर्ड शीट। ओके, शीट ओपन होने के बाद से आप यहाँ क्लिक कीजिए ड्राइंग एंड देन मॉडल, डोल क्लिक ऑन इट एंड डोल लेफ्ट क्लिक ऑन इट और यू गो विद दिस ऑल्सो। तो डोल लेफ्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रीव्यू यहाँ से आप ऑन रखिए, जो प्लॉट कर रहे हैं वो आपको शो होगा। मैं लेता हूँ इसमें टॉप व्यू एंड इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी अभी ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, देन अगेन सेक्शन व्यू, इसका सेंटर से हॉरिजॉन्टल यहाँ कट करेंगे इसको सेंटर से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं से यहाँ ले लेता हूँ। देन राइट क्लिक, प्रोजेक्टेड व्यू, सेलेक्ट दिस व्यू एंड यहाँ पे इसका व्यू लीजिए आप आइसोमेट्रिक शेडेड विथ एज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे राइट कॉर्नर में आई और जो उसका रेशियो है 1:1 और 1:2, आप इसको चूज कर लीजिए यहाँ पे 1:1। देन सेलेक्टेड। नाउ annotation, model, item
एंड सेलेक्ट यहाँ पे कीजिए इंटायर मॉडल एंड इंपोर्ट आइटम इनटू ऑल व्यूज़। तो जो डायमेंशंस है वो आपकी सभी व्यूज़ में लगेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 70-10 ये आया है। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी जो है उधर फैल रही है। सेलेक्टेड, ओके, एंड राइट क्लिक एंड अलाइन वर्टिकल। ओके, एंड देन इसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सबको और यहाँ ले आइए। ठीक है, नेक्स्ट। देन अगेन यहाँ पे 15 हमें ऊपर शो करना है। ठीक है, टॉप व्यू में, तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। 15 यहाँ पे 10 एंड देन 5 और 50 एंड 40 एंड दिस इज 30। ओके, 30, 40 एंड दिस इज 70। तो दिस इज नॉट एक्चुअली द diameter, this is the side of this rectangular shape. Now 5 radius and this is 22 and 10 radius. So here we need to define this radius which is also 10 radius. Format and then OK. Then here we need to define the diameter of the circle which is 15 and other and layer format. Okay, so I hope कि क्लियर हुआ हो आपको। Then फाइल एंड सेव एज टाइप में यहाँ पे आप चूज कीजिए Adobe Portable Document Format PDF एंड देन सेव इट। तो ये PDF जनरेट कर देगा एंड देन प्रिंट इट। ठीक है, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू।